Hello friends, I am Aditya and you are watching German class. So this is B2 Certificat Deutsch. I have received so many requests that we want to join the B2 level batches. But because of shortage of timing, I cannot start new batches. Already old batches are going on. So I have decided to start B2 classes on this YouTube platform. So I will make separate playlist. So you can watch one by one on different topics. So we'll see how much we can do. And I hope you will like this and you will definitely feel that as if you are learning B2 level with me live. So today's topic is Freundschaft. Freundschaft, we discuss this. We learn important vocabulary, word charts, structures, everything which is related to B2 level. So let's begin. So Freundschaft. So what do you mean by this term Freundschaft? So was verstehen Sie? Was verstehen Sie unter dem Begriff? Unter dem Begriff Freundschaft. It means what do you understand with this term? So you will write, you can also write your answer in the comment. What do you understand? Okay, this is a topic. This topic is important in your Schreiben and your expression part. So either you will be asked to write or you will be asked to speak. So this is very important topic. So was verstehen Sie unter dem Begriff Freundschaft? What do you understand by this term Freundschaft? So you can write here. You can tell me what do you understand Freundschaft meaning for you. So like I can write Freundschaft ist für mich jemand, jemand, der immer da ist, wenn ich die Hilfe brauche. Means friendship for me, someone who is always there, who is always with me when I need the help. And this is for me Freundschaft. So you can also write your definition. What do you understand by this term Freundschaft? Okay, what is the meaning of Freundschaft for you? Okay, so you must all write this. Freundschaft ist für mich jemand, der immer da ist, always there, wenn ich die Hilfe brauche. Or I can write jemand, der treu ist. Kann mein Freund sein. Means someone who is treu, who is trustworthy, faithful, can be my friend. Or so we are using relative arts, na? So jemand, der mich unterstützt, ist mein bester Freund. Somebody who understood, support me, who supports me is my best friend. So I have written different ways, different types of definition you can also write. आप भी लिख सकते हो फ्रेंडशिप का मतलब क्या है आपके लिए, फ्रेंडशिप क्या है आपके लिए. जैसे मैंने लिखा फ्रेंडशिप मेरे लिए कोई पर्सन जो हमेशा मेरे साथ खड़ा है जब मुझे उसकी हेल्प की जरूरत है. फ्रेंडशिप का मतलब है कोई ऐसा व्यक्ति जो फेथफुल है मेरे लिए, कोई ऐसा व्यक्ति जो मुझे सपोर्ट करता है, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड हो सकता है. ठीक है, तो इस तरह से आप भी लिखोगे. आपकी डेफिनेशन क्या है? Was verstehen Sie unter dem Begriff Freundschaft? This is our question, very very important. Okay, so friendship means different for different people. It can be your friend, it can be your parents, it can be your neighbor, it can be your school friend, it can be your colleague, it can be your neighbor, anyone. Okay, so you write what do you think. Okay, you can write what do you understand. Okay, who is your friend? Okay, so this is very very important topic that we are doing. You can also write in the comments, I will see and check. Okay, you can also write what do you understand by this. I will see your answers, okay, in the chat. I would be happy. Okay,
Now we'll see what are the characteristics. Like tolerant und Ehrlichkeit. Or Zuverlässigkeit. Zuverlässigkeit means reliability. Zuverlässigkeit. These are different adjectives, Eigenschaften. These are noun. Tolerant und Ehrlichkeit oder Zuverlässigkeit. Right? Or what else? Höflichkeit, politeness. Friend should be polite. He should be polite in behavior. Höflichkeit. Zuverlässigkeit, reliable friend. Someone who is very reliable. Höflichkeit, politeness. Offenheit. My friend should be very open. He should be very open. Okay. These are different Eigenschaften. These are different Eigenschaften. Oh, there are so many things. Like now we write some adjective. Suppose ehrlich. Ehrlich means honest. Then witzig, funny. Humorvoll, humorous. Sportlich. My friend should be sporty. Or loyal. We say loyal. Yes. Treu. And somebody says schön, beautiful. Should be good at appearance. Like gut aussehend. Good appearance, good looking. Hilfsbereit, helpful. My friend should be helpful. Verständnisvoll, understandable, etc. These are the adjectives. So now when we make sentence, how do we say? Like tolerant und Ehrlichkeit. Now we use different structure. Tolerant und Ehrlichkeit sind A und O für mich. A und O means very important in der Freundschaft. Means it's a structure in der Freundschaft. Means Tolerant und Ehrlichkeit sind A und O für mich in der Freundschaft. Tolerance and honesty are important for me in the friendship. Right? Something is das A und O. Means something is very, very important. Something is sehr wichtig. It's very important for me. This is a very important characteristics. Like I say, ehrlich, Ehrlichkeit, Ehrlichkeit oder Höflichkeit ist für mich Nummer eins. Für mich Nummer eins. Eigenschaft. Nummer eins der guten Eigenschaft. Der guten Eigenschaften. Means ist für mich Nummer eins. Means this is number one for me. Nummer eins. First priority. The number one of the good characteristic, good qualities. Means my friend should be honest or tolerant or reliable, helpful, whatever you want to write. And these are the structure. Like A und O. This is very important. A und O. A und O means A, O. Das ist A und O für mich. Something is very important for me. Das ist für mich Nummer eins der guten Freundschaft, der guten Eigenschaften. This is number one for me as a good friends. der guten Freundschaft ले सकते हैं. Good friendship की एक क्वालिटी है. राइट, इस तरह से आप लिखोगे. बताइए.
ठीक है, आप भी लिखिए पे आंसर यहाँ पे। ठीक है, और क्या क्या लिख सकते हो आप? और इसके स्ट्रक्चर और दूसरे स्ट्रक्चर भी हम देखेंगे कैसे लिख सकते हैं हम। जैसे देखो, लाइक कुछ भी मैंने लिखा, कलर चेंज कर लेते हैं। लाइक एयरलिश काइट is Spitzenreiter, means Spitzenreiter für mich, means the first position. Honesty is the first position for me, means honesty is the priority for me. सबसे सबसे पहली चीज ऑनेस्टी होना चाहिए मेरे फ्रेंड में। और an Esther Steller state für mich, das mein Freund ehrlich ist। मतलब फर्स्ट पोजीशन पे मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि मेरा फ्रेंड ऑनेस्ट हो, ईमानदार हो। an Esther Steller, an Esther Steller means on the first position, an Esther Steller, an Esther Steller für mich state state an Esther Stelle steht für mich, dass mein Freund ehrlich ist. और Ehrlichkeit ist Spitzenreiter für mich in der Freundschaft. In the friendship, this is the first priority. तो इस तरह से आप सेंटेंस लिखोगे, आप बोल भी सकते हो, ऐसे लिख भी सकते हो। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो हर दिन हम इस तरह से एक टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है B2 की बुक में। मैं बुक के अकॉर्डिंग ही चल रहा हूँ, फॉलो कर रहा हूँ जो भी बुक है, बुक के अकॉर्डिंग जो भी टॉपिक्स हैं उनको हम धीरे से डील करेंगे स्लोली, और इस तरह सेंटेंसेस बनाएंगे। लाइक ठीक है, इतना आपने लिखा, हम इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। जैसे Ich mag es nicht, I don't like, dass mein Freund untreu untreu ist। I don't like that my friend unreliable। मेरे को पसंद नहीं है कि मेरा दोस्त अनरिलायबल हो। Ich mag es nicht, dass mein Freund untreu ist। और unverlässige Personen, unverlässige Menschen gehören nicht zu meinem Freund। मतलब जो अनरिलायबल लोग हैं वो मेरे फ्रेंड नहीं है। unverlässige मतलब अनरिलायबल people, unverlässige Menschen gehören nicht zu meinem Freund। unreliable people don't belong to my friend, मतलब वो मेरे दोस्त हो ही नहीं सकते। तो इस तरह से भी आप डिफाइन कर सकते हो। दिस इज द अनदर वे ऑफ डिफाइनिंग, राइट। ठीक है, तो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। और एडजेक्टिव्स आपको लिखने होंगे, किस तरह से आपका फ्रेंड्स हो सकता है, किस क्या क्या उसमें क्वालिटी होनी चाहिए। बुक में बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हैं, हम उसी में से कुछ देख लेते हैं। जैसे लॉयल, एयर गाइसिश, ओफन, टॉलरेंट, गेबिल्डेड, एजुकेटेड, विट्सिश, फनी, ग्रॉसिश, हेयरफुलिश, एयरलिश, सुपरलिशिश, स्पोर्टलिश, गूट आउसेंट, ये सब हमने देखा है ऑलरेडी, है ना। इस तरह से आप सेंटेंसेस बनाओगे, इस तरह से आप फ्रेम करोगे कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर फ्रेंड, हु कैन बी योर फ्रेंड, ना कौन आपका फ्रेंड हो सकता है, उसमें क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, है ना। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसका नेक्स्ट एस्पेक्ट। इसी फ्रेंडशिप टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे और नेक्स्ट क्लास में उसको कंटिन्यू करेंगे। तो वीडियो देखते रहना, इस तरह की वीडियोस मिलेगी, और लाइक कर देना, और चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको इस तरह का नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी नया वीडियो आएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। Auf Wiedersehen, bis bald।